Good morning, team. Globally, markets have come down slightly after one news which is slightly negative. Poland is claiming that Russian missile has hit them, and two people have died, but US is not confirming it. So this is where the markets have come off the highs, but still global markets are good. Inflation in US and even in India is coming down. So there is a cooling on of inflation, which is one side positive for the market. But the new escalation, because Poland is a NATO country, we don't know what will be the reaction. But SGS index is showing negative. But any lower opening will be an opportunity to buy. Trump is saying that he will run for president in US in 2024. It is an early start for election, 2 years ahead. G20 meeting is going on in Indonesia, and India is getting a lot of prominence there, which can be very positive for India in long run to come. Kshitija was talking about BL signing almost multiple agreement. There are 4 MOAs which BL has signed, and even HAL has signed one more contract, letter of intent. So they have handed over 16 ALH MK 1111 to Indian Coast Guard. This was ordered in March 2017. In 5 years time they have given it. Now Hindustan Aeronautics has got a letter of intent for 9 more helicopters. This is very positive for defense companies. Defense companies are in news. So that is one sector which has been doing very good. And Indigo has commenced the cargo operation with its first flight between Delhi and Mumbai. Positive for Indigo. In business standard, there was one analysis which has been done. It is about the corporate result. They have done it on 2,725 companies. The result shows that revenue was higher by 22.3%. So revenue was not the problem. Profit after tax is down by 6.3%. That is where the problem comes. And it is after almost 8 quarters. We are seeing profit after tax turning turning lower, and it is after post-COVID. But we need to understand it was due to inflationary pressure and inventory loss, because many raw materials was bought at higher levels, and when inventory is not depleted, you have to sell it at a lower cost, but you will not be making that kind of margin. That is one reason. But in the same report, 51 banks which have reported results, their growth has been almost 58% in profit after tax. That is something to note down. So banking as a sector is likely to outperform for the next 2-3 months. And PSU banks will be our top pick. Bank of Baroda, Canara Bank, and State Bank of India are the 3 PSU banks which we like. And I think any correction, see, every time it will not rally immediately. There will be some pause. So any correction would be an opportunity to buy in these stocks, led by capital goods. Capital goods also had a very good results season. So capital goods is one sector to watch out for. In that, we like ABB, Siemens, Cummins, AIA Engineering, Thermax, and Praj Industries. Praj Industries and Cummins are looking very good. I think today our report call is on Cummins. So this is one sector to look out for. And defense is one more sector which has been outperformer. Even in yesterday's trade, these stocks have started to move higher. As Hitendra has pointed out, gas stocks have been on the move. IGL, MGL, Gujarat Gas, even GAIL and GSPL. So these 5 gas stocks are looking good. IGL is looking very good. So these are few stocks to note down. And McDowell's yesterday has started to outperform. So if McDowell's crosses 820,
very soon, 8 to 10% rally in McDowell's is possible. And my analyst was saying that Surya Roshni result was very good. So this is one stock to watch out for. Yesterday in evening meeting, Brijesh talked about Kim's. Now Kim's is really looking good, and Fortis, I have one more data. Fortis delivery volume is 99 crores yesterday, which is 4 times higher. So hospital stocks are stocks to watch out for. So this is very important. And last, it is about trade data. Yesterday, government announced trade data where exports were down by 17%, at $29.78 billion. Import was higher by 5.7% at $56.69 billion. Trade deficit is very high at $26.91 billion. So I was looking at where our negative growth on exports has happened. It is mainly on iron ore, which is dropped by 90%. That is because of the restriction which government has put, and mainly Europe not performing well as it is, because our cotton yarn, handicraft, carpet, these are man-made yarn, meat and dairy products. These are something we export to developed countries, and that is where the growth is not coming. All these I've said is more than 25% negative growth compared to previous year. Even pharma has not done good. There is a negative growth of 9% in drugs and pharma. So these are few things, the government has to concentrate, mainly iron ore and steel. Due to export taxes, this sector has come down. So I think, trade deficit is slightly negative, but inflation coming down is something, to look out for. With this, over to you, Brijesh. गुड मॉर्निंग ऑल. नाउ वी अभी हम ये कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं. तो पहले फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं. तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड से ये उनका अपडेट्स आया है कि उन्होंने ये करंट मंथ में उन्होंने ऑर्डर बुक्स दिए हैं, जिनके जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक्स है जो 915 के रेंज में उन्होंने बताया है. हालांकि ये जो नंबर्स है लास्ट ईयर से ज़्यादा अच्छे हैं. होता क्या है कि नॉर्मली मानसून सीजन में ये उनका ड्राई सीजन ये सीजन में उनके ऑर्डर बुक्स काफ़ी कम होते हैं. बट देन जैसे मानसून वगैरह कम होते हैं तो इनके ये ड्राई सीजन निकल जाने के बाद इनके 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 रोड एक्टिविटीज में आपको ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलता है. सो बेसिकली ये सेक्टर में पीएनसी इंफ्रा, एचजी इंफ्रा और पीएसपी प्रोजेक्ट ये हमारे प्रेफर्ड स्टॉक्स है जो जिसपे हम वॉच कर रहे हैं और हम इस पे पॉजिटिव बायस मेंटेन कर रहे हैं. तो ओवरऑल जो भी कमीशंस हो रहे हैं लास्ट 2 महीने में वो काफी पॉजिटिव रहेगा ये सेक्टर्स के लिए. तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड के ऊपर एक डेटा अपडेट था. अगला है कि ये जो रिलायंस रिटेल, नायका और आदित्य बिरला और ट्रेंड जैसे प्राइवेट कंपनी है उसमें इक्विटी इन्वेस्टर्स को अपने इंटरेस्ट दिखा रहे हैं. तो बेसिकली टीपीजी कैपिटल, एडवांट इंटरनेशनल ये ऐसे कंपनियों ने दिखाया. वो बता रहे हैं कि वो इंटरेस्टेड रहेगी करीब 29% के स्टेक्स लेने के लिए. सो ये पॉजिटिव न्यूज हो सकता है ये काउंटर्स के लिए. अगला अपडेट है महिंद्रा फार्म इक्विपमेंट्स के ऊपर. उन्होंने एक मध्य प्रदेश में उन्होंने ये फार्म इक्विपमेंट्स के ऊपर महिंद्रा ने फैक्ट्री ओपन किया है जो 1200 कंबाइन हार्वेस्टर्स और 3300 राइस ट्रांसप्लांटर ये प्रोड्यूस करेंगे. तो ये बेसिकली ये पॉजिटिव न्यूज होगा एमएनएम फार्म इक्विपमेंट्स के लिए. उनका जो Q2 का जो ओवरऑल मार्केट में अगर Q2 में फार्म इक्विपमेंट्स का जो कंट्रीब्यूशन देखा तो 25% का कंट्रीब्यूशन देखा गया है. सो जो कि एक अच्छा है. एमएनएम इसका जो एक्सपोजर है वो इंडियन मार्केट्स को चलते हुए एशियन, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिकन मार्केट्स में भी बढ़ाएंगी. तो ये एमएनएम फार्म इक्विपमेंट्स के लिए काफी पॉजिटिव न्यूज है.
इसके बाद एक अपडेट है टीसीएस के ऊपर। टीसीएस को एक डील मिला है पोर्चुगल एयरबेस कंपनी से कि वो वहाँ पे उनका डिजिटलाइजेशन और उनके डिजाइनिंग के सॉल्यूशंस को ये ऐड करेंगे। तो ओवरऑल टीसीएस का जो कंट्रीब्यूशन है यूके में फिलहाल तो अभी 30% के अराउंड कर रहा है, तो इससे टीसीएस को और बेनिफिट होगा। तो ये न्यूज़ टीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद और एक न्यूज़ जो अभी सुनने में आया है कि ग्लोबली थोड़ा मार्केट थोड़ा नीचे करेक्ट कर रहा है। ये कंफर्म नहीं है, लेकिन पोलैंड और रशिया के बीच में ये बताया गया है कि शायद रशिया ने मिसाइल ये किया हुआ है। बट जबकि ये पोलैंड नाटो के अंडर आता है, तो ये यूएस को इसको कंफर्म करना है। तो बट कि ये एक रीजन है जिसकी वजह से आपको एसजीएक्स थोड़ा सा नीचे देखने को मिल रहा है। इसके बाद ओवरऑल हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन जो है वो कम होते जा रहे हैं। तो इंडिया के और यूएस के दोनों के इन्फ्लेशन कम आ रहे हैं, तो ये बेसिकली ये पॉजिटिव साइन है ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स के लिए। अभी जो G20 का जो मीटिंग चल रहा है उसमें काफी सारे हमको ये हमारे प्रमोशंस और काफी सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं जो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए हमें लगता है कि ये अच्छा खासा ग्रोथ ऐड करेगा। उसके बाद एक एचएएल के ऊपर है एक अपडेट है। एचएएल को अभी लेटली उन्होंने 16M के 111 का जो ऑर्डर था जो मिला था उनको मार्च 2017, उसने ऑर्डर अभी कंप्लीट किया और उनको अभी 9 और हेलीकॉप्टर्स के ऑर्डर्स मिले। तो उनके ऑर्डर बुक्स काफी अच्छे हैं, तो ये एचएएल के लिए काफी पॉजिटिव होने वाला है। साथ ही में बीईएल के लिए भी 4 नए ऑर्डर्स मिले एमओयू, तो वो भी बीईएल के लिए भी आगे चलते हुए पॉजिटिव न्यूज है। डिफेंस के काउंटर्स ऑलरेडी पॉजिटिव में चल रहे हैं, तो हमें यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में जब भी मार्केट तेजी करेगा तो डिफेंस एक सेक्टर रहेगा जो आउट परफॉर्म करता रहेगा। तो बीईएल एचएएल हमारा उसमें पॉजिटिव पिक है। अगला एक अपडेट इंडिगो के ऊपर है। इंडिगो ने कार्गो ऑपरेशंस चालू किया है दिल्ली मुंबई में, तो ये न्यूज भी एक इंडिगो के लिए पॉजिटिव हो सकता है। बैंकिंग सेक्टर्स पे हमारा अगला 2-3 महीने के लिए काफी पॉजिटिव व्यू मेंटेन करके चल रहा है। स्पेसिफिकली पीएसयू बैंक जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और एसबीआई है। तो हम मान के चल रहे हैं कि जब भी मार्केट में आपको करेक्शंस मिलेंगे तो डेफिनेटली ये बाय ऑन डिक्लाइन वाले होंगे। लेवल्स आप हमारे साथ क्रॉस चेक कर सकते हैं अगर आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है। तो बेसिकली हम काफी स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी प्लस पीएसयू बैंक्स ये काफी स्ट्रांग अपसाइड रहेगा। ये मार्केट को ऊपरी तरफ लेके जाएगा। इसके चलते दूसरा जो सेक्टर जो आप देख सकते हो वो है कैपिटल गुड्स, जिसमें एबीबी सीमेंट्स, प्राज, क्यूमेंस ये स्टॉक्स है। क्यूमेंस का तो आज हमने ट्रेड भी दिया हुआ है, तो ये पोजिशनल ट्रेड है, 3 से 4 हफ्ते के हिसाब से है। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म थोड़ा सा इसमें परसेंटेज गेन थोड़ा ज्यादा है, तो स्टॉप लॉसेस फॉलो करके चलिए। इसके साथ गैस स्टॉक्स पे भी हमने थोड़ा मोमेंटम देखना चालू किया। जैसे कि आईजीएल, एमजीएल, गेल, जीएस ये हमारे पिक्स भी है और हमें पॉजिटिव भी लगते हैं चार्ट्स पे, तो ये इस पे भी हम आप ध्यान रख सकते हो। सर ने एक मैकडॉवल के ऊपर बताया है कि मैकडॉवल का 820 का लेवल है, उसके ऊपर ट्रिगर मिलता तो मोमेंटम में आपको मे बी 2-3 वीक्स के टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हो तो 8-10% का पॉसिबिलिटी है। तो एमएनएम को आपको ध्यान में रखना चाहिए। सूर्य रोशनी के रिजल्ट्स देखे गए थे, रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो सूर्य रोशनी में थोड़ा बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। हॉस्पिटल्स के जो डेटा, फोर्टिस का जो डेटा आया है वो भी स्ट्रॉन्ग डेटा है, तो हमें भी लगता है कि हॉस्पिटल स्टॉक्स में भी थोड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो नेट नेट ओवरऑल जो डेटा मिल रहा है वो काफी स्ट्रांग है, जो ये बता रहा है कि मार्केट तेजी की तरफ जाएगा। नेगेटिव में एक हमने देखा कि फार्मा के नंबर्स थोड़े नेगेटिव आए, तो थोड़ा कॉशियस व्यू रख के चलते हैं। तो इसमें एग्रेसिव बाय और एवरेजिंग या नीचे लोअर बॉटम फिशिंग वगैरह नहीं करते, तो फिलहाल टाइम बिंग के लिए फार्मा ये सेक्टर थोड़ा साइडवेज यहाँ पे अवॉइड करेंगे। अगला एक अपडेट है आयरन ओर एंड स्टील के ऊपर, जहाँ पे एक्सपोर्ट टैक्स जो बढ़ने के कारण यहाँ ये सेक्टर्स में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। सो स्पेसिफिकली तो थोड़ा साइडलाइन हो सकता है ये आयरन ओर एंड स्टील वाले काउंटर्स। अगला नंबर आता है इंडिया के एक्सपोर्ट्स डेटा के ऊपर। तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स के जो डेटा है 17% से डिक्लाइन हुआ है, विच इज $29.78 बिलियन अक्टूबर में।
और ट्रेड डेफिसिट भी थोड़ा सा वाइडन हुआ है, $26.91 बिलियन, तो थोड़ा सा प्रेशर इसमें देखने को मिला। तो हो सकता है कि जिस हिसाब से हमारे फ्यूचर कोलैबोरेशन हो रहे हैं, तो आगे आने वाले दिनों में शायद हमें अच्छे वो देखने को मिल सकते हैं। सो ओवरऑल मार्केट का व्यू हम पॉजिटिव मेंटेन करके चल रहे हैं। सो हो सकता है कि हम अगले निफ्टी में इमीडिएटली 18,600 के वगैरह लेवल्स पार करते देख सकते हैं। और फिर से ये कहना चाहूंगा कि बैंक निफ्टी हम काफी स्ट्रांग बुलिश है। तो बैंक निफ्टी बैंकिंग स्टॉक्स में आप जब भी मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, तो बैंकिंग में आप बायो डिक्लेयर का स्ट्रेटेजी फॉलो करके चलिए। If you see after 2 days of sideways and consolidation, Nifty bulls were preparing to ready to make a breakout. And if you see in the first half also, if you see the Nifty bulls were only in the consolidation, but in the last hour, if you see, saw aggressive buying, primarily led in the banking stocks. And this buying was in the broad-based participation also was witnessed in the index. And we have closed above 18,400, so now 18,600 or the all-time high levels are very near, and that can be increased and we can be trending higher. So if you see now, technically now supports have now shifted from 18,000 to 18,200 levels. This should be demand zone and attractive zone for that. Any trend change in momentum will be below 18,000 levels only. So if any dip is there, that should be an opportunity to be taken to be bought, and we should ahead for moving in. See, likewise for the Bank Nifty also, Bank Nifty also did a consolidation more for the past 3 trading sessions, and in the yesterday it gave a breakout above 42,300 and closed at the highest point near of the day. So yesterday, if you see the private banks were the major leaders of the strength, and basically the strength was also from the heavyweights like SBI, ICICI, and HDFC Bank. So if you see now, the now range has again shifted from 41,000, 42,000 to 44,000 levels. So this should be ideally we should be looking at ahead. And any dip to 41,300, 41,500 should be used in opportunity board. But if we go below 40,500 or 40,000 levels, then that should be can be a little bit on a negative side for the index. So overall, the view remains bullish for the Bank Nifty also too. Any intraday correction should be used an opportunity to trade long. And this was also seen in the futures also. There was an aggressive long built up in Bank Nifty with 14% longs in the index. So and the PCR also jumped from from 1 to 1.3. So overall, on the data side and on the technical charts are looking good for Bank Nifty. Whereas for the Nifty, the longs position were only of 2%, and that is of 2 lakh shares. And the PCI also jumped from 1 to 1.26. On the option front, if you see in the Nifty, then 18,000 put is having a good writing, and 18,800 is now having a highest OI with there could be a resistance over there. So now writers have shifted the range from 18,500 to 18,800 levels. Whereas in the Bank Nifty also, if you see in the call support, the 42,000 P gives a good support over there. On the call side, there is a resistance at 42,500 and 43,000 zones. That should act aware, or that should be hurdles for the Bank Nifty. And on the stock specific analysis, there were 3 longs built up, that is Delta Corp, IGL, and GSPL with 29, 23, and 20% respectively. And whereas on the short side, if you see, then Polycap, NMDC, and ISATC added shorts, basically 18, 12, and 8%. On the FIS front, if you see, then FIS also are waiting, and they are not adding much of the position. They were only for 600 contracts long. That is that they are maintaining a 60% long ratio in the index, and there is no major change in that, with 36,500 total outstanding contracts. On the cash side also, they had sold near about 221 crores, and while SDI also sold for 549 crores. The stock should be kept on radar are the gas stocks. IGL, MGL are looking, and they can move higher from here. And if you see today's the SGX Nifty is also showing a flattish opening, only 40 points down. So any depth should be used in opportunity to be bought. On the call front, we have initiated a call in Cummins India. It's a positional call that can be bought in the range of 1360 to 1345 with the stop loss of 1301 and the target of 1500. So that's it from mine. I'll hand over to Bhavesh for further updates. Thank you. Hi, good morning, team. So starting with first update from Ministry of Road and Transport. They have released its monthly report for road construction and awarding for the month of October. So we have seen very strong growth of the project that was awarded. It's for 915 kilometers, which is 3 times more than the October last year. So road construction construction has been muted due to monsoons, and now it is expected to pick up. And our topics in these sectors are PNC Infra, HG Infra, and PSP projects.
Secondly, there is a news regarding stake sale in the company TCNS Clothing. So some investors which have shown interest in buying a 29% stake of TA Associates are Reliance Retail, Nykaa, Aditya Birla Fashion, and Trend, and even private equity investors like TPG Capital and Advent International have shown interest. So promoters are willing to sell to companies who is a strategic investor rather than a pure private equity investor. Then on Mahindra and Mahindra Farm Equipment, so this part of this, which is a part of Mahindra Group, has inaugurated the first dedicated farm plant machinery in Madhya Pradesh, and this is spread over 23 acres and manufactures nearly 1,200 combine harvesters and 3,300 rice transplanters per year. So, so this will be catering to Asia, not only India but Asia, Africa, Europe, and America. So it's positive for the company. Then on TCS, so TCS has won a digital transformation deal from TAP Air Portugal, which is a Portuguese-based airline company. So obviously, this is a positive for TCS, but importantly, it is in the European region where TCS overall has 30% stake and is trying to improve its shares, but deal size remains undisclosed. So that's it from me. Over to you, the retail team. Thank you, sir. Good morning, everyone. Few updates from my side. First update on Tata Motors. So Tata Group own Jaguar Land Rover is stitching up the partnership to improve semiconductor supply, as it looks improve sell volume in the second half of this current fiscal year. So this automaker noted that despite of strong demand and record order book, sales during quarter two continue to be constrained by the global chip shortage. The next update on Bharat Electronics. Company has signed a multiple MOU with India Professions LLC Limited and SVC Tech Ventures LLP and Hindustan Shipyard for the various purpose in the defense sector. So one positive news for the Bharat Electronics. The next update on Godrej Property. Company said it has achieved sales worth of rupees 500 crore in its new housing project at Pune. In September, the company had launched its new project, Godrej Woods Ville in Hinjewadi, Pune. Next update on India's Tata Group is planning to open at least 20 beauty tech stores where it will use virtual makeup kiskos and digital skin tests to get young shoppers to buy premium cosmetic products, and according to the company document and familiar with its strategy. Then next update on ONGC. ONGC Limited overseas arm state-owned ONGC Corporation has submitted application to Russian authorities to retake 20% stake in Sakhalin 1 oil gas field in the far east region of the country. The Russian President Putin last month disbanded Exxon Net, a region subsidiary for the US super major ExxonMobil, as an operator for the Sakhalin 1 and transferred the project and all its asset and equipment to a new operator. So that's it from my end. Now I will hand over to Prabhakar sir for further updates. Thank you.